Priyanka welcomes you. Thank you, ma'am. Thank you. It's my Ma'am, pleasure to be here with you. so ma'am, please tell me about yourself now. Okay, myself, Dr. Shweta Jindal. I've been brought up in Ludhiana, born and brought up in Ludhiana. I've done my schooling from Kundan Vidya Mandir School and done my degree, BHMS from Lord Mahavira Homeopathic Medical College and Hospital. And presently, I am doing now. I'm a president in the NGO Bharat Vikas Parishad Tirgur Grant from the last 1.5 years, and I started in this NGO my journey as a member, and then our treasurer, secretary, and finally the president. And you will be more pleased to know that it's a Mahila branch, Mahila Shakha. और राष्ट्रीय you can say राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हमारी प्रथम महिला अधिकारी शाखा है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर ही विकास रत्न प्रथम विकास रत्न प्राप्त करने का गौरव मिला है हमें. Ma'am, so tell me about your challenges that you have faced in your journey, especially. The first challenge is my marriage. The reason being, when you are first you are having your own clinic and you got married and there's a change in a place, naturally you are going to shift your clinic, and in the earlier stage of your married life you can't join the clinic. And it's only after that my daughter, I just made her join the Playway school, and then I again started my career. I opened my clinic and just started my journey. And now I'm running my own clinic in BRS Nagar. Wow, nice, very nice. And I feel lucky that I've been supported by my parents, my family, my husband. Everyone supported me to go ahead, to continue with my career and all whatever I want to achieve in my life. Ma'am, so who was your inspiration? जो आप अभी इतने बड़े मुकाम पे हैं, आपकी inspiration कौन था? I think my inspiration is my parents, because when I was a child, my parent in 90s, I think there you don't have so much of the NGOs at that moment. My father is a member of a patient service society that provides milk, rusk or bread or biscuits to the attendants of the patients of DMC every evening, and it's still running now. So I've learned from that. It's the joy of giving. It's not always that you give a bulk. Isn't it the small kind of you can say small acts of kindness that you do that's more important? And secondly, my mother, after retirement in 99, she joined this NGO, Bharat Vikas Parishad, and now she is a state convener, Mahila Sehbhagita, Punjab West. And after, you can say, following the footsteps of my mother, I came into this NGO. And it really gives me the internal peace when you do something for the, you can say, disabled people and the other lower sector of the society. It gives you immense pleasure and the internal happiness at the moment. Ma'am, any social changes you want to make in our country? Yeah, the first social change I would say that every what you can call is that you can say that women's what I read in the newspapers and daily, you can say it's the daily headlines that the women, they are the raped, isn't it? I think this is the biggest social stigma being a woman we are facing. We should have to stand strongly. It's not like that, because sometimes for the one or the other reason we say that we should doesn't want to come up, isn't it? We say nahi yaar, who is going to face this police case and all that. Sometimes the people, they are, I just looking for the robbery case in Dugri in Ludhiana, you can say the video. I saw that the people, they become so strong and they just pull the, you can say, the two persons from the bike, and it's a big, I think, hats off to the people, to the crowd, जिन्होंने ये सब कुछ देखा and they put their efforts to do something. So I think instead of making all these videos and putting up on the social side, we should be more active in this field कि कोई भी अगर कोई crime हमारे आसपास हम देख रहे हैं, maybe a big or small, we should try to come forward and help in every respect, so that when these such people, sick-minded people, they think of doing anything wrong,
They know that it's not only the police who is going to punish us, it's the public also who is also more aware and is not going to spare us. We have to be, they just have to think twice, thrice for doing anything wrong in their life. So, ma'am, any message you want to give to Man Mahila Ka? I think, yeah, I would like to give a message for the marvelous Mahilas that every woman is so unique and they should live their life with the dignity, right? Isn't, and more, every woman has a one or the other potential. So we have to utilize that potential in one or the other way. It's better we should come out of their homes because every woman is a homemaker, isn't it? Yeah. Being a doctor, being a president of any branch or whatever we are doing, running any NGO, we are managing inside and outside beautifully. So it's better whatever your dreams are, whatever you want to be in your life, just you should come out. You have an immense power in yourself. आपने मतलब इतनी power है ना woman में, you can't imagine. And when you are going to channelize this power, it makes miracles, and of course it helps you to achieve success in every field. And always remember, you are the strongest, beautiful, blessed, marvelous Mahila. Anything more you want to share with us? Your experiences, your something? I would like to, no, I would like to share the beautiful, you can say the beautiful science homeopathy. Isn't it? That homeopathy is such a beautiful science that heals you from inside. Isn't it? मतलब हम कहते हैं कि when today we all are facing so much of the stress in our life. Someone is facing the emotional crisis in one or the other, family problems आ रही है ना, family issues रहते हैं हमारे घरों में, कुछ ना कुछ रहते हैं. We keep on thinking that, and that is a mental illness which throws the disease or the problem on the physical. And in spite of, this is the difference between allopathy and here comes in the homeopathy. That is the only reason we don't have any particular medicine for a disease. Like you might have heard in allopathy, there is if one is having a fever, they used to give the antipyretic. If anybody is having inflammation or septic condition, they used to give the antibiotics and the other medicines. But we never give medicine for any disease. We give medicine only for the sick people to heal them after taking their total constitution and knowing their susceptibility and the total vitals. I really appreciate this, Pathy. Moreover, from childhood, I used to take always homeopathic medicine. My parents say whenever any problem happens, like in case of herpes zoster, one time my father had, and he's just having only homeopathic medicine, and to my surprise, within a week, he's quite fine. It's always that, I always believe that gives you the real sense of well-being. That's it. So I always admire this Pathy, but no doubt sometimes we have the certain medical emergencies in our life where we have our certain limitations in homeopathy. Then allopathy comes the turn of the allopathy. That's all. Both goes hand in hand. Yeah. And one thing I like to share about my this NGO, Bharat Vikas Parishad, I want to just give a message to all who are going to listen this my video in this Man Mahila Ka, that this NGO we work on the 5 principles, that is the seva, sahyog, sampark, sanskar, and one is smarpan. Like सबसे पहले हम जो हमारे you can say members होते हैं या कोई भी जो नहीं भी जानते, हमारे friend circle में है, हमारी family है, we came in contact with that we call them the संपर्क. उनको हम पहले संपर्क करते हैं, फिर हम उन्हें अपने साथ बुलाते हैं कि आओ आप हमारी मीटिंग ज्वाइन करो, आप देखो हम कैसे लगाते हैं, क्या क्या हम एक्टिविटीज अपनी गतिविधियां करते हैं, और फिर हम उनको अपने साथ जब सहयोग लेते हैं उनका, फिर हम उनको अपने साथ सेवा के कार्य में जोड़ते हैं. और जो संस्कार है उसमें हम सभी जितने भी मतलब बच्चे होते हैं, बच्चे मीन्स जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेज में होते हैं, हम उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं. जैसे नेशनल ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, नेशनल संस्कृत ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, भारत को जानो competition, and this all that goes for the national level. Like first we used to contact we are having the different, you can say 12 branches in Ludhiana, those who are working
right? And then they work, do all these functions, they, you can say, this competitions at the individual level, वो अपना branch level पे हम करते हैं. Then the students who are come to the on the first, second and the third position, they just sent to the district level. From the district they go to the regional, state level, and state to the regional, and then it's at the national levels. एंड मोर ओवर जो हमारी बाकी की जो मेन एक्टिविटीज जो हमारी चलती रहती है वो होती है जैसे जरूरतमंद है जो, और साथ में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं. कई बार क्या होता है कि वो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करते हैं हम उन बच्चों के लिए फंक्शन करते हैं एड टू नीडी, जिसमें लगभग हमारा 1.5 से 2 लाख के करीब हमारा खर्च आता है. और वो हम उनको स्कॉलरशिप की फॉर्म में, जो 10 के या 12 की जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं कि जो जिनके अबव 80 या 90% जितनी भी एक मेरिट हम एक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं ताकि वो अपनी आगे स्टडीज को कंटिन्यू कर सके. और इसी के अंतर्गत हमारा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ आगे ऐसे हमारा कार्यक्रम वो चलता रहता है. फिर जो जरूरतमंद लड़कियां होती हैं उनके लिए शादी के लिए आर्थिक सहयोग हम उनको देते हैं कि ताकि उनको दिक्कत ना आए, और सामूहिक सरल विवाह करवाते हैं. ठीक है, साथ में हम होते हैं जो मेन हमारा है वो हम देते हैं दिव्यांग मीन्स हैंडीकैप, उनको जो हम कृत्रिम अंग बांटते हैं. कृत्रिम अंग इसकी जिसका किसी का हाथ नहीं है तो उसको हैंड प्रोवाइड कर दिया, हैंड से एल्बो तक नहीं है तो एल्बो तक है. सिमिलरली इन द फीट की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको वो डोनेट करते हैं. साथ में जो होता है ट्राई साइकिल्स हैं, कोई हैंडीकैप्ड है जो चलाना आना जाने कहीं को दिक्कत होती है कि हम कैसे जाएं, तो वी प्रोवाइड देम द ट्राई साइकिल्स. हमारे कैंप्स लगते हैं तो उनमें वो देते हैं, हियरिंग एड मशीन्स देते हैं. और साथ में ये होता है कि एक मैं इट्स नॉट ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग दिस, इज ऑलवेज अ टीम वर्क, क्योंकि एक जना हम नहीं कर सकते. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि समटाइम्स एवरी टाइम कभी ना कभी किसी का कोई बिजी स्केड्यूल आता है, कभी कोई बिजी होता है, तो कैसे है, तो इट्स ऑल अ टीम वर्क. तो सब मिलके हम लोग चलते हैं. इट्स ऑल इन अ वेल मैनेज एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर्म. इट्स अ बिग, यू कैन से हमारे इट वाज अप्रॉक्स व्हाट इफ आई कैन से हमारी 1450 लगभग शाखाएं हैं इन ऑल ओवर पूरे भारत में. तो उसमें आप लगा लो कि हमारे 70,000 मेंबर्स हैं. अगर हम पति पत्नी को काउंट करें तो नेचुरली काउंट्स कम्स आउट टू बी डबल 1,40,000 के राउंड हमारे मेंबर्स हैं, जो सभी अपने अलग अलग शहरों में जहां भी वो बैठे हैं अपना कोई ना कोई सेवा कार्य वो लोग अपना करते रहते हैं. ये है. और अभी हमारा प्रोजेक्ट हम प्रेजेंटली जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है अनीमिया मुक्त भारत, और एक आत्मनिर्भरता के लिए हम कर रहे हैं. अनीमिया मुक्त के लिए लाइक अभी पीछे हमने लोहे की कढ़ाइयां दी हैं, साथ में गुड़ चना कि चलो वो ये है कि चलो एक डेट पीपल ये लोग होते हैं कई बार तो लेबर क्लास में ज्यादा अनीमिया की लेडीज में प्रॉब्लम आती है. लोअर क्लास में नेचुरली दे डोंट हैव सो मच ऑफ अ गुड डाइट. इवन ये तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि अगर अनीमिया से हमें बचना है तो हम लोहे की कढ़ाई, इट्स वेरी सिंपल. सब्जी तो घर में रोज बनती है तो वी कैन कुक इन दिस जो लोहे की कढ़ाई, अगर उसमें हम खाना बनाते हैं तो इट्स वेरी गुड, अ वेरी रिच सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारा हीमोग्लोबिन उससे बढ़ रहा है. तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी वे कि वी कैन हैव अ गुड़ चना एंड दिस लोहे की कढ़ाई में हम खाना बनाएं और खाएं और खिलाएं भी सबको, बिकॉज हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मैम मान महिला का आपको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू करती है कि आपने अपना थोड़ा सा समय निकाल के हमारे साथ इंटरेक्शन किया. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, ma'am, and the best wishes to you also. You are doing a very good job. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो मेरे को तो इवन आपका जो एक आता है ना मान महिला का, I think this caption is very you can say very powerful caption कि इतना इसमें strong each and it shows that कि वाकई की हर एक महिला जो है वो एक मान की अधिकारी है. She really deserves the मान. अगर क्योंकि एक थोड़ा सा होता है कि when you give a show a little respect to the every woman, she comes out in a more, she blooms out more beautifully, isn't it? तो उसको लगता है कि अगर मैंने छोटा सा कोई कार्य किया है, जो नेचुरली जो छोटा कार्य कर रही है उसका तो मन है कि I will do more and more for the society. But when you give such little, you can say impressive this thing, so उसको और अच्छा लगता है and everyone wants to work more. Thank you. I really nice to be with you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am.